Hello guys, thank you for the click. Welcome to the Fat Mario. You're listening to Kaustubh, and in this following podcast, you're going to listen about understanding about the war and the concept of the war. So, thank you. Hello viewers or listeners, according to the platform you choose. My name is Kaustubh, and मैं साउथ इंडिया आई मीन हैदराबाद में आई वाज born, and now I'm maturing or growing in Mumbai, Maharashtra. So this is my intro, and I'm little bit curious. I'm just graduated engineer, so this is my intro, and I want to start a podcast channel to express my views and thoughts. So I met my friend Sat Nikam. We both are friends through engineer. That engineering helped us to link our interest or to bond something. So this is my intro, and over to Sat. Yeah, uh, yeah. Hello everyone. I'm Sarth, and we are since our interests match, and we want to explore ourselves in different fields, and even we are going to call our friends on this platform to discuss and to talk. So we are starting with a new podcast series on Spotify as well, and you can even view our discussions on YouTube. Uh, it's named as Are Thambi Kai Boltas. So it basically originates from the uh, thing that Kaustubh is from Hyderabad, so he has a South Indian influence on himself. So like Thambi comes from there, and from there, and since I'm Maharashtrian and I speak Marathi, so so we did that thing. Uh, And and main part is we are not mocking. I mean, we are not giving a Thambi as a Tamilian to whole South India. I like the word Thambi as we use like a brother or something. So we just used it not to criticize a whole South India as a Tamilian. It's just a word I like. So we choose the word Thambi to address me. And the Kaya Boltos, the Marathi part, address the Sat. So the mixture of both South India and North India, uh, it's a good chemistry, and we uh, want to channelize this. So these are yeah, intros. and just a short disclaimer: like whatever discussions we are going to conduct here, like we are just expressing our opinions, and जैसे किसी religious sentiments या फिर किसी specific person को, like we are not hurt, like our intention is not to hurt anybody. So it's just a, Hmm. basic discussion, and uh, uh, you can say we are expressing our opinions, and we are going to call our friends as well here, where we will be discussing like random topics. uh, Hmm. so yeah, we'll see you guys in further episodes. So a small thing, guys. We are just a newbies or an amateurs trying to figure out how to conduct a podcast or uh, how to give you a good experience. So this is just a learning phase. So if there are any abrupt cuts, as we are using Zoom meeting as to record or to express our views, uh, so kindly just ignore the abrupt cuts, and if you feel interested, kindly let us know. So Yeah, that's a since small thing. yeah, our aim is to like we everybody don't have perfect knowledge or full knowledge. So with whatever half knowledge have, we are just trying to amalgamate it together. So if you have any topic to discuss, or if you want to even come uh, in the meeting with us, you can join. You can just put up a message to us, or on YouTube you can just comment it. Yeah. So I'm a big fan of क्रिस्टोफर नोलन. उसका पास्ट मूवीज बहुत सारा मैं बहुत ऐसा रिपीटेड में देख रहा था. लाइक उसका फर्स्ट मूवी फॉलोइंग और मेमेंटो, इंसेप्शन, ये सब तो देखा था. लेकिन Hmm. अभी जो रिसेंटली जो मूवीज बना रहा है अभी, लाइक फॉर सपोज टेनेट
और द रिसेंट ब्लॉकबस्टर और मास्टरपीस ओपनहाइमर. तो ही इज मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर और द हिस्ट्री पार्ट. ही इज लिंकिंग समथिंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री पार्ट. सो एक्चुअली मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है और उतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था. लेकिन ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस थोड़ा कुछ स्पार्क हुआ कि भाई हमें भी जानना चाहिए कि होता क्या है, लाइक हुआ क्या है अभी तक. So that got me into this history part, and the main thing or the elephant in the history book is the World War thing, where the whole world participated, and कुछ हुआ है उधर, एक कांड कुछ हुआ है. So बराबर है. the Oppenheimer में वो जो the bomb scene or the implementation of the bomb, making of the bomb, that affected, that concluded to a world peace. बट पीस के पहले भी एक वॉर होता है, लाइक यू करेक्ट. यू टेक अ पीस, और पीस मतलब यू इन्वेंट पीस और यू डिस्कवर पीस बिकॉज ऑफ अ वॉर. हाँ, किधर था मैं. हाँ, पीस लाते क्यों, क्योंकि यू हैव सफर्ड अ लॉट. सफर से एक एक काम स्टेट ऑफ माइंड लाना है. सो यू इंक्लाइन टुवर्ड्स पीस. सो ए पीस के लिए मूवी में मुझे जो समझा, ओपनहाइमर ने his thought process was to make a atomic bomb. It's a where it is a powerful weapon. वो बस डराने के लिए था, या हाँ, मतलब like दिखाने के लिए कि एक यूएस. violence दिखा के, like we can हाँ. create this and these are the implications or the after effects. So let's calm ourselves नहीं, बट before. ये सिर्फ साइंटिस्ट्स के माइंड में था कि हम अगर ऐसा Hmm, कुछ न्यूक्लियर वेपन करेंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि यूएस इज द सुपर पावर और फिर कुछ ऐसा hmm, मेजर कर सकता है. बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि करेंगे वो, लाइक गवर्नमेंट hmm, करेगा. बट वही हाँ. तो. The बट अभी main thing तूने. was to maintain peace, a governance चाहिए, like you said, like there must be the presence of a king in the forest, like lion. So that करेक्ट. makes a cruel or a violent lion which take care of peace, like वो एक चाहिए. So he made the bomb. So that part of the movie was very interesting to me. And मुझे कुछ फिलोसॉफीज इसके बारे में बात करना या समझना मुझे पसंद है. सो I want to talk about it. Like, as you also have some knowledge about the history and the World War and so on. So I just want to talk, and I want to express my views, and I want to learn some things from you. So I play the part of a question, and you are my answers. So let's. नहीं यार, मतलब लाइक मुझे भी जो भी नॉलेज, मतलब थोड़ा बहुत जो पता है वो ये यूट्यूब, फिर थोड़ा बहुत बुक से पता है. बट Hmm, मतलब स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग. हम आगे जाके ऐसे कुछ और एपिसोड्स करेंगे जहाँ पर हम बुलाएंगे किसी को और जो बेटर जानता है, और तो उससे hmm, और हाफ नॉलेज में भी थोड़ा भर के बाद में फुल बन सकता है, फुल नियर फुल. hmm, सो हाँ, तो तू नोलन के बारे में बात कर रहा था, नोलन के मूवीज के बारे में. सो hmm. बिफोर ओपनहाइमर डंकर्क भी था. सो हाँ. ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री. बट वो डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज्यादा सिनेमैटिकली ग्लोरीफाई करता है, इसकी वजह से अपने को देखने को वो अच्छा लगता है. लाइक Hmm, इंटरेस्ट लेके लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जानते हैं, जानना चाहते हैं. फिर उसके बाद मे बी इवन मेरे इसमें भी इंटरेस्ट, मतलब मेरे को जितना हमने स्कूल में पढ़ा था उतना तो ठीक है. बट बाद में कुछ अगर ज्यादा डिटेल में जानना था, तो मूवी देखने के बाद ही फिर वर्ल्ड वॉर में ऐसा जाके देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है. hmm, सो या बट ये वर्ल्ड वॉर जो अभी ओपन हैमर का जो एरा है वो तो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 का है. बट अभी अगर हम पूरा डिग आउट करते गए तो इट विल गो ऑन टू द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर 1. और वर्ल्ड वॉर 1 का जो कॉजेस है वो तो इतना मल्टीपल है, क्योंकि तभी कॉलोनियलिज्म वाज एट इट्स पीक.
हर हर Mm-hmm. किसी बिग नेशन को यही था कि हाउ विल कैप्चर मोर कंट्रीज, कॉलोनाइज मोर कंट्रीज, एंड कैसे Mm. हम सुपर पावर बने। सो Mm. वही तो, वो जो अभी भी चल रहा है, मतलब अभी चल नहीं रहा है वैसे, बट सबके माइंड में तो यही है सुपर पावर्स की, कि हम कैसे और Mm. बेटर हो सकते हैं ऐसा। Survival of the fittest or taking control. करेक्ट करेक्ट। And तो do you agree about the concept of overpowering or taking dominance? Like, what is your thoughts on that? लाइक डोमिनेटिंग others with your power, I think I'm not in favor of that. अगर हम हमारा खुद का पावर खुद को डेवलप करने को यूज करेंगे एज अ कंट्री, एंड Hmm. देन मे बी फिर बाकी कंट्रीज इंस्पायर होके हमसे सीख के वो भी आगे बढ़े तो अच्छा ही है, बट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स सो दैट वी स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ अदर्स rather than putting others down. So, So, what is your solution? Like, what will you put the solution on the table? Like, अभी अभी इस पे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कि हाँ, अभी okay. अभी वर्ल्ड वॉर में ये सब जो भी वॉर, बड़े बड़े फाइट्स हुए, या फिर इवन ओपन हैमर का। Clearing the concept or the context. मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में आई हैव लिटिल नॉलेज एंड जितना भी मैं नॉलेज लिया है वो बस यूट्यूब का ओवर सिंप्लीफाइड का वो एक वीडियो देख के ही हुआ है. सो आई हाँ, उतना डीप नॉलेज है ही नहीं. नहीं सो बट यहाँ पर हाँ. अपन बोलते हैं कि इट इज लाइक फॉर ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कि ओवर सिंप्लीफाइड का सब पार्ट्स देख लो, कि वो एक्चुअली बहुत एकदम सिंपलिस्टिक वे में उसने एक्सप्लेन किया है यूट्यूबर ने। हाँ. एंड प्लीज वो जाके देखो, उसका कुछ दो पार्ट्स में हर वो वर्ल्ड वॉर, फिर इवन कोल्ड वॉर्स, फिर और फिर रशियन रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में भी है, तो देख लो। कंटिन्यू। एक्चुअली इट्स सिंप्लीफाइड वर्जन है. इट्स वेरी 7 minute और 11 minute वीडियो. उतना टाइम भी नहीं लगेगा. सो यू अगर कैन अगर जस्ट गो थ्रू. अगर आप पीयर प्रेशर में आके सब वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपको हाँ. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ. तो सो एक हाँ. दिन में प्रिपेयर कर सकते हो तुम लोग। हाँ, एग्जाम्पल मैं खुद ही लाइक I want to talk about it, but I don't know anything about. So it helped me a lot. So वो एक सजेशन है. हाँ, बस मुझे बस उसका बस बेसिक नॉलेज है. वो भी पूरा याद नहीं है. लेकिन क्वेश्चनेबल है. उतना नॉलेज तो है. सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हाँ, सो तुम जैसे तुम बोल रहा था कि कैन यू पुट अप अ सॉल्यूशन ऑन द टेबल फॉर हम्म. द फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। बट उस पे मेरा हम्म. क्रॉस क्वेश्चन ये था कि अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, लाइक वर्ल्ड वॉर वन से यूएस ने भी इवन सीख लिया था कि वी वोंट पार्टिसिपेट इन द वॉर, बट लाइक दे वर बीइंग पुल्ड इनटू इट बाय हम्म. बाय द पर्ल हार्बर इंसिडेंट, सबको पता है। बट फिर भी हम्म. was there a point of the nuclear attack on Hiroshima and Nagasaki? तो उनको पता नहीं था कि it will cause so much damage, हम्म. like it will go on for generations। तो फिर भी उन्होंने क्यों किया? सो अभी इसके टू साइड्स है, जैसे कॉइन के हर टू साइड्स होते हैं, कि देर आर सम इन फेवर ऑफ दैट, सम आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट वी कांट अराइव एट अ कंक्लूजन। तो मुझे लगता है, हम्म. बट अभी ऐसा एक पॉजिटिवली बात करें तो ऐसा भी है कि उन्होंने क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा लैंडमार्क टाइप सेट करके रखा है कि इफ वी डू सच न्यूक्लियर वॉर्स और अटैक्स तो इतना हाँ. लेवल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो इट्स गुड कि हम कुछ ना करें, शांति रखें। इसे तो यूनाइटेड हम्म. नेशंस भी सेटअप किया, और फिर सब कंट्रीज अभी पीस पीस के लिए क्या इस मतलब फेवर में है ऐसा। हाँ. So you are just saying that creating a benchmark of violence, हाँ हाँ, showing that these are the after effects. So करेक्ट let's not take it to that level. करेक्ट हाँ, करेक्ट। it's nice. हम्म. सो जैसे तूने बोला कि इट्स अ पॉजिटिव दैट एक बेंचमार्क क्रिएट करके यू आर सेटिंग द एग्जांपल. लाइक these are the effects you can see. Actually, what are the positive of war, like positive effects of war, pros of war, according to you? या सो Like, सबसे as we are इम्पोर्टेंट तो ये, discussing about the world war, so I just want to know about what is the concept of war and why do we do, and what are the pros and cons?
हाँ तो लाइक मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यही है कि वॉर अगर होता है तो एवरी कंट्री को एक फ्रेश अप्रोच मिलता है आगे बढ़ने का, कि अभी पूरी तरीके से हम ग्राउंडेड हो चुका है, तो हाउ टू गेट अप, लिफ्ट आवर सेल्स। लाइक द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दैट आर जर्मनी एंड जापान, जो पूरी तरीके से इकोनॉमिकली भी और इवन लाइक पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल भी पूरा डैमेज हो गया था, फिर भी अभी दे आर लाइक टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड हम्म लाइक नियर दे आर competing विद द सुपर पावर लाइक यूएस हो गया या रशिया हो गया। हम्म सो ये एक होता है कि यू कैन फ्रेशली लुक आउट। जैसे हम एग्जाम में भी कभी फेल हो जाते हैं तो अगले एग्जाम को हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, फिर एक नया जोश लेके जाते हैं कि नहीं हम करेंगे अभी इस बार। सो वैसा। हाँ एंड इवन द अभी अपन ने डिस्कस किया कि द द consequences that we can face if such हम्म adverse thing happens. सो हम्म वो तो एक है ही पॉजिटिव इफेक्ट। बट भाई हम्म, वॉर इज नॉट अ थिंग कि जिसको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए, उसके फेवर में जाना चाहिए, क्योंकि एंड में झगड़ के कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, भाई an eye for an eye makes the whole world वर्ल्ड blind. ब्लाइंड। I agree. करेक्ट। हाँ, the way I see the positive of war is, you know the loopholes of your system, like where are you lacking, where are you lacking, and where can you develop or how can you secure the position. And the second part is development, करेक्ट। like a new technologies can be developed, new opportunities, new job placements, or the new role or position in the field of technology or science or anything. So एक और एक ही you will get a new lesson, like you will get a new chapter in the book करेक्ट। where you can learn about your past experience. So these are, I think, एंड इतना तो पॉजिटिव है. इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट इज डायरेक्टर्स लाइक नोलन देन क्रिएट सच Can मास्टरपीसेस। create, they get inspired, yes. वो एक है, like, and the cons or the negative or the it's the distraction part. वो तो सबको पता है, यस करेक्ट। हाँ, बट वही। distraction, psychological influence or the after effects. या And और कुछ नया है क्या कि नेगेटिव ऑफ वॉर, नेगेटिव, अभी negatives of war जो apart बोले वो from the नेगेटिव ही है। distractions. हाँ, ऐसे okay, तो अभी। हाँ, the eager to dominate, like based on the war, हाँ and new नहीं नहीं, person, ये तुम उसको भी लगेगा कि मुझे भी चाहिए. ऐसा बोल सकते हो कि जो जिन्होंने लॉस फेस किया है, सो दे विल हम्म हैव अ फीलिंग ऑफ गेटिंग अ लाइक रिवेंज। ठीक है. या हाँ. जैसा वर्ल्ड वॉर वन का एंड में हुआ था, क्योंकि हम्म हैवी मतलब लोन इम्पोज किया गया था, सॉरी मतलब हैवी हाँ, लोन, मतलब सॉरी डेट डेट में they जर्मनी गया they था। should repay. हाँ, या okay. दे शुड रीपे ऑल द कॉस्ट फॉर द हाँ. वर्ल्ड वॉर वन। हम्म और यही हम्म एक ट्रिगरिंग पॉइंट था ना हिटलर के लिए कि व्हाई I शुड want to बी। make this change. हाँ, हाँ. आई वांट टू बिकम द सुपर पावर, हम्म मैग्लोमेनियक, हाँ. कि हमको सब ऑक्यूपाई करते जाना है। Yes. तो फिर ये हम्म रीपेमेंट का पॉइंट ही नहीं होगा ऐसा। हम्म so okay, अबे इधर इधर and अभी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अभी इधर, एक मतलब हाँ. लाइक आई वांट टू डिस्कस वन थिंग कि हम्म इवन दो अभी हम कुछ उस पूरे वर्ल्ड में पूरा पीस है एंड एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट वेल, टेक्नोलॉजिकली सब आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल आई हम्म फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन लॉट ऑफ कंट्रीज। हाँ, या ओके. इट्स लाइक कि जो जैसा वर्ल्ड वॉर इवन वन के स्टार्ट में भी हुआ था, कि पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक टेंशन बिल्डअप हो गया था कि इधर से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इधर से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ बीच में एक ट्रिगर पॉइंट होके फिर फट जाता है फिर सब कुछ। तो जो वैसे हाँ. ही अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन फॉर द अपकमिंग ईयर्स ऐसा कुछ होते जाएगा, क्योंकि हर हर कोई राइट रेस में लग गया है कि हमें आगे बढ़ना है। हम्म सो व्हाट डू यू थिंक हम्म वुड बी द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर वर्ल्ड वॉर थ्री इफ हम्म इट हैपेंस? if it happens, uh, as we live in a digital world,
or in a virtual thing. Main triggering is, I think, the data privacies, or it may be the triggering point. Mm, Like, you can't secure your own privacy, so the insecurities will develop uh, from one point to other. So that may become a avalanche effect and leads to a war. mm. I mean, there's a Yeah, point, I think. So breaching your security. correct. So So नहीं वो ये point तो correct ही है कि cyber crime. So I correct. think that that way. And असुर असुर. yeah, so yeah, the main, yeah, okay. It is That portrayed in shows asur. the highest. Okay, that explains a lot. And And I think the triggering point, like I should not comment on this, but I feel it can be India Pakistan scenario. Like if any of okay. them, uh, like because see, if we talk about Indian Pakistan scenario right now, still we can see a proper division between two, Hmm. Hmm. with a few of them on this side and few of them on the other. Yeah, they're playing a virtual tug of war where there is no rope, but Ha, everyone is feeling the yeah, tension. the And tension, correct. the main part is the crowd is also cheering. Like, they Ha, are also interested, but they don't correct. want. But they Ha, don't want to start a war, but they're interested of the ha. conflict, like that interest. So Yeah. there's a अरे interesting. कितने सारे वीडियोस है यूट्यूब पे टू एक्सप्लेनिंग दैट हाउ इंडिया like no that's that fact but how India is better in all aspects like in military or we Hmm. can say in terms of patriotism in people. And those videos only get the most views. We And हाँ, correct. so Yeah. हाँ, वो एक है. And the main, apart from the joke, I want to get this point of identity. Like, Hmm. due to this new era of being gender fluid, Hmm. they started to divide themselves from human beings itself. Like, the male and female is a default division, but Correct. now there are so many divisions among themselves. So there's no such thing. We can accumulate all this community as one. So we have to bring a solution to bring all this as one, and not to judge everyone or to create a new identity to that complicates the burden. And but yeah, Hmm. I think the identity part also may lead to a future war or something because of one offending other. So Hmm. उसका भी एक हो सकता है. Yeah, when I was I adjusted the setting कि हम दोनों अच्छे दिखे. Yeah. हाँ, थैंक Yes. यू. हाँ, सो इतना तो अब ठीक है. वॉर के बारे में आई थिंक वी got some point of view. And let's talk about world, like world war. So we discussed about the word war. So let's come towards the word world. So what is a world or a country or a place according to you? Uh, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसके बारे में रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करने के लिए एक और गेस्ट बुलाया, प्लान किया था, लेकिन फॉर सम रीजन ही इज अनएबल टू जॉइन. सो वी आर जस्ट roaming in and around the world, and we are just yeah. passing the time इन डेप्थ till he. टॉक अबाउट प्रॉपर वर्ल्ड वॉर उसके अंदर के ईच एंड एवरी डिटेल के बारे में हम बाद में जाएंगे जब वो आ जाएगा. Hmm. सो या सो यू आस्क्ड अबाउट व्हाट इज वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी कंट्री. Hmm. तो सिंपलिस्टिक वे में बोलूँ तो अ प्लेस वेयर लाइक माइंडेड पीपल और लाइक माइंडेड A थॉट्स. community. हाँ कम्युनिटी Hmm. but based on like few of the countries are based on religion and few are Hmm. based on race as well. So Language. yeah, correct. लैंग्वेज Okay. इज ओके बट क्योंकि अभी लैंग्वेज तो ऐसा हो गया कि ड्यू टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एवरीवेयर सब जगह पे सब सेम ही होता है. Migration, yeah. हाँ.
वो तो है. बट some या parts of this इधर रहेंगे या एकदम opposite way में रहेंगे एक डायरेक्शन या में. बट मेजर अगर टू फैक्टर्स बोलूँ तो इट वुड बी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बेस्ड ऑन रेस, लाइक Hmm. बिकॉज हाँ, ऐसा बोल सकते हैं. So to me it is an unsolvable, और क्या बोल सकते हैं इसको, how can we put it in words, uh, we can't unseparate, और क्या बोलते हैं इसको, we can't combine, क्या बोलते हैं, we can't gel it up like two communities को like एक साथ. I हम्म. think that's an default problem we get as हम्म. we live. So बट we can't nowadays solve. after the we know that Vasudhaiva Kutumbakam is a famous line, but Okay. like people believe in that. Like हाँ. we can say there like in for everything there are two groups. So similarly for this as well, there are a lot of people who support this. So हम्म. वैसा even though you belong to a different religion or a different you speak different language or you're from different race, still हम्म. इससे कुछ अभी फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि uh, now we are way ahead than those unorthodox thoughts हम्म. that were being imposed upon us हम्म. since generations, past generations. हम्म. So like, So do you think we developed from the that area, like the past thing, where we separate ourselves from our kind of brothers, like a yeah, different language brother. yeah, So. yeah. See, uh, if so, even just to explain this in a bit easier way, अगर अभी भी हम किसी फॉरेनर को देखते हैं या किसी हम्म. अफ्रीकन पर्सन को देखते हैं, टू टेक फॉर एग्जांपल, या फिर इवन किसी जापानीज या चाइनीज पर्सन को देखते हैं, तो हम्म. वी आर लाइक कि ओ वी आर अ लिटिल बिट क्यूरियस, वी वांट टू नो, हम्म. इवन वी स्टेयर एट देम, वी हम्म. हाँ सो तो वो एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है जो नहीं होनी चाहिए, हाँ. बिकॉज कुछ टाइम देते हैं, like we give time to digest, like what are they like, वो लोग या अलग क्यों है वो देखने के लिए, for to digest the thought that he's different, we give some time, we spend some time, and if the time is spent quality or in a good way, a good relation can be achieved like. एस्टेब्लिश्ड, करेक्ट. या नहीं, बट ये होना ही नहीं चाहिए था बिकॉज वी ऑल लाइक आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द पास्ट, नॉट सिस्टर्स, हम्म. सॉरी, हम्म. वो हाँ, सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट. हम्म. बट यही कि दैट क्यूरियोसिटी हमें हमेशा होता है माइंड में जो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है अभी जो है वो है, क्या बोल सकते. हम्म. So ये हुआ वर्ल्ड एंड वॉर बट एंड प्रेटी गुड, मतलब डिस्कशन हमने किया, नॉट कि हमने कुछ फैक्ट्स को स्टिक नहीं किया, वी ट्राई टू पुट आवर जनरलाइज द ओपिनियन. टॉपिक हाँ एंड हाँ. हाँ. सो ओके, वर्ल्ड वॉर तो हो गया, एंड ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, like what triggered, uh, I also want to know, because even I didn't clearly learned or read about this, but I want to know about what triggered world war one. अच्छा अच्छा, ओके, सो वर्ल्ड वॉर वन, सो इवन आई डोंट नो इन डेप्थ और इवन आई कैन बी रॉन्ग, बट जितना मुझे पता है और जितना मैंने देखा है यूट्यूब वगैरह या जितने भी बुक्स वगैरह में या इवन स्कूल में पढ़ा Hmm. है, सो एक्चुअल में देखा जाए तो देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर Hmm. दैट. सो लेट्स फर्स्ट एड्रेस दैट कि तब तब का टाइम ऐसा था कि जैसे मैंने किसी याद रखा था स्कूल में फॉर राइटिंग आंसर इन एग्जाम. So there were Hmm. four causes. That is MAIN, main, four main causes. Uh, Okay. so for timing हम A को बाजू में रखते हैं. Let's focus on M, I and N. So M Hmm. is militarism. So militarism कैसा था कि वेस्टर्न कंट्रीज तभी ऐसा थे कि लाइक हम बेटर टैंक्स बनाएंगे, हम बेटर आर्टिलरी बनाएंगे, मिसाइल्स वगैरह या फिर जो भी गन्स हो गया. सिमिलरली Hmm. इवन जर्मनी, लाइक यूरोप में भी ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब भी ये सेम रेस में लगे थे कि Hmm. हाउ वी कैन प्रूव आवर पावर.
So that was militarism. हम्म, Second is I, that is like A हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं I. हाँ, So ओके, I is हाँ, imperialism. Imperialism मतलब कि colonialism जो तभी हो रहा था कि हम सब पूरा दुनिया पे कैप्चर करेंगे, हमें ये भी हाँ, कंट्री चाहिए, हमें ये भी आइलैंड चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए. तो एवरीथिंग मस्ट बी कॉन्कर्ड एंड रूल्ड बाय वन, या करेक्ट सो लाइक हाँ. और तभी जस्ट मतलब मुझे अभी याद है अफ्रीका तभी पूरा अनएक्सप्लोर्ड ही था. तो हम्म, और तभी कैसा था कि ये लोग जब ये लोग का नजर पड़ा अफ्रीका में, लाइक ब्रिटेन वगैरह, यूएस, ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज, रशिया भी हो गया. तो हम्म, ये लोग पूरा उनको तो पहले पता चला कि ये बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड है, और इवन एशिया में भी, बट अफ्रीका पूरी तरीके से अनएक्सप्लोर्ड था. तो बड़ा चंक ऑफ लैंड मिल रहा है, फिर चीप लेबर है क्योंकि बहुत सारा उधर मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल लिविंग देयर, बट स्टिल हम्म. तो दे वर यूजिंग देम. उसके बाद या एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज I नेचुरल just want to रिसोर्सेज. break your flow. Sorry to interrupt. हाँ. Uh, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तूने बताया, like which adds to the topic of pros of the war, like हम्म. exploring a new place or हाँ. to know that people, करेक्ट. that uh, that adds to the point. And एक और सॉरी, कुछ तो आया था थॉट में लेकिन वो अचानक से भूल गया. एक्सप्लोरिंग अ वर्ल्ड, एंड हाँ, द अदर पॉइंट इज सीकिंग फॉर हेल्प, like या you look एंड around, इवन like हाँ. in the यहाँ पर मैं crisis you look इंटरप्ट around, like करूंगा. who will help me. हाँ. करेक्ट करेक्ट. एंड वन मोर थिंग इज एक्सप्लोरिंग के साथ देर वाज अ नीड और देर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ अ फ्यू रिसोर्सेज भी, कि हमारे हाँ. पास ऑयल कम है. सो हम्म. वी आर इन लाइक डाइंग नीड ऑफ ऑयल राइट नाउ एंड वी वांट टू गेन इट फ्रॉम समवेयर. सो हम निकल पड़ते हैं एंड फिर हमें हाँ. मिल जाता है, फिर इधर है. सो ओके लेट्स कैप्चर दिस, कि हमारा रिसोर्सेस मिलते जाएगा अपने को ना. सो हाँ. वही लाइक डायमंड्स भी बहुत, डायमंड गोल्ड माइंस वगैरह अफ्रीका में बहुत ज्यादा थे. सो दे हम्म. वर लाइक फुल्ली अट्रैक्टेड टू इट. सो वैसा. हाँ. सो आई वॉज इम्पेरियलिज्म एंड एन वॉज नेशनलिज्म. ओके. नेशनलिज्म तभी मतलब तभी उसका टर्मिनोलॉजी का मतलब ये था कि इवन दो कंट्रीज डिवाइडेड थे बाय किंगडम्स, तभी किंगडम्स बोल सकते हैं, नॉट बाय हम्म. गवर्नमेंट्स. बट तभी ऐसा हम्म. था कि कोई किसी अलग किंगडम में, लाइक ए और बी किंगडम है, तो बी किंगडम में किसी ए किंगडम के फॉलो करने वाले लोग रहते थे. सो दे हम्म. वांटेड कि ओके यहाँ पर वो मेरे फॉलो करने वाले लोग रहते, तो हमें ये एरिया दे दो, बिकॉज वी आर नेशनलिस्टिक, वी आर पैट्रियोटिक टुवर्ड्स दिस किंगडम या ओके. फिर कंट्री. ओके. जैसा हाँ. जैसा जर्मनी, जर्मन्स बहुत सारे जर्मन स्प्रेड आउट थे इन फ्रांस, या फिर इवन हम्म. बॉस्निया हर्जेगोविना, या फिर हम्म. चेकोस्लोवाकिया वगैरह एरिया में. सो हम्म. वैसा. तो हम्म. ये था नेशनलिज्म. सो दीज वर द मेजर ओके. कॉजेस. बट द हम्म. ट्रिगरिंग पॉइंट था वो ए, मेन वाला ए. सो दैट ए हम्म. इज असैसिनेशन, असैसिनेशन ऑफ वाज दैट ऑस्ट्रिया का क्या उसका नाम, आर्क ड्यूक ओके. फर्डिनेंड कुछ तो उसका नाम था, क्या अभी मुझे पूरा याद नहीं मेरे को. सो नो ऑस्ट्रिया का प्रॉब्लम. हाँ, नाम में क्या तो रखा है. हाँ. तो हाँ. उसका असस किसी ने तो मार दिया था. उसका भी नाम कुछ तो कोई सर्बियन मतलब ग्रुप था, उसके एक बंदे चलो ने ठीक है, मार दिया था. एक नाम देते हैं उसको, कमलेश नाम देते, लाइक कमलेश ने उसको मार हाँ, दिया, डन. कमलेश ने कट्टा निकाला, और वो हाँ. पूरी तरीके से रेडी था कि भाई इसको उड़ाने का. एक दिन वो पूरा अपने मतलब ऑस्ट्रिया का प्रिंस बॉस्निया के एरिया में हम्म. आया था घूमने को, कि चेकआउट करने की हम्म. क्या सब बराबर है वगैरह. हम्म. एंड फिर उसको मतलब उड़ाने का प्लान पूरा सेट था. बट इधर एक बहुत हम्म. कॉमिक स्टोरी है, मतलब एक्चुअल में हुआ था ये, कि आई गेस वो अटैक करता है को मतलब उनका कोई तो अलग मेंबर अटैक करता है ग्रुप का, कमलेश के. तो वो हाँ. बॉम्ब फेंकता है, और हाँ. बॉम्ब गाड़ी से मतलब क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होके किसी बाउंस और ओके. बाउंस होके किधर हाँ. और गिर जाता है, और बच जाते हैं वो लोग, ओके. और कोई हाँ. और इंजोर हो जाता है. और फिर ये आगे आगे ओके. बढ़ते हैं. और बाद में मतलब तभी भी वो आर्कड्यूक के पास प्रॉपर चांस था कि हम भाग सकते हैं, बट ही वेंट टू द हम्म. हॉस्पिटल टू सी दैट पर्सन जो इंजर्ड था. ओके. हाँ. ओके. सो जब वो जा रहा था तभी हम्म. वापस ये लोग ने देखा. एंड हम्म. एंड स्टिल दे अगेन टुक आई अनदर गेस. चांस. हाँ. और स्टिल वापस शायद मिस हो गया वो, ठीक है. और कुछ तो एक आई ओके. गेस एक अलग सा टर्न, गली में टर्न ले लेते हैं उनका गाड़ी, और हाँ. वो हाँ. गली में ये कमलेश खड़ा खड़ा रहता है कट्टे के साथ.
हाँ, और ये उड़ा देता है भाई। और that तब भी sounds like an Anurag Kashyap movie, man. Like Gangs of वासेपुर है भाई, Wasseypur, गैंग्स ऑफ uh, गैंग्स ऑफ बॉस्निया। Gangs of Bosnia. Like it's a comedic error, but concluded with an assassination. That's cool. बट वही फिर तभी ये असैसिनेशन हो गया। एंड Hmm. ऑस्ट्रिया फिर पूरा भड़क गया कि भाई ये ऐसे कैसे हम हमारे प्रिंस को मार सकता है। सो दे सीक Hmm. हेल्प हेल्प ऑफ जर्मनी। वो पूछते कि हम क्या करें, हम सर्बिया पे अटैक करेंगे फुल ऑन। Hmm. तो जर्मनी बोलता है जाओ तुम लोग करो, मैं तो हूँ तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम अटैक करो। तो ये लोग कर देते हैं। और फिर सर्बिया के सपोर्ट में तभी लाइक रशिया, शायद रशिया ही था या पता Hmm. नहीं, या फिर फ्रांस और यूके का भी नजर था कि ये अटैक हो रहा है वगैरह, यूरोप पे थोड़ा Hmm. चिंगारी ये हो गया। हाँ, तो या A doubt is why did Kamlesh wanted to kill him? Like उसका रीजन क्या था? Like just of क्योंकि rage or हाँ. नहीं, सर्बियन कम्युनिटी मतलब एक सर्बिया का ग्रुप था। सो दे Hmm. शायद उनका ऐसा था कि दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट सर्बियन नेशन में भी, क्योंकि वो पूरा एक ही एरिया था, ऑस्ट्रिया 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 हंगेरियन एम्पायर, पूरा एम्पायर था। सो दे हाँ. मे बी दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट, लाइक मैंने बोला ना, नेशनलिज्म। Nationality. हाँ, yeah, कोई नेशनलिज्म हाँ. या सो Addressed as nationality. So hello guys, thank you for listening. So अभी तक we discussed about what is a war and what is the world according to us, and we discussed about the pros and cons of the war and what is the triggering part of a new generation war. So in the next part of the podcast, we'll discuss about the World War concept and what started the World War and how it continued and what are the problems. We can discuss all this in the next part. So thank you for listening.